Hello student, welcome back to the third lecture of chapter number 11, three-dimensional geometry. Previous lecture we have completed the exercise 11.2. Today we will start with the miscellaneous exercise. Miscellaneous exercise में when we are talking about the miscellaneous exercise, first question is the similar that we have seen in the 11.2. What does you have in here? We have to show that line joining the which one point origin to the 211 is perpendicular to the line joining the other 2 points as been here. अब दो लाइंस परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या है? That the dot product of that direction must be 0. यानी कि either we can say the which one direction of line AB B1 direction of line CD B2 that dot product 0, or you can say A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 must be equal to 0. ये कार्टेशियन फॉर्म हुआ, ये वेक्टर फॉर्म हुआ कंडीशन का. तो बस वही यहाँ पे करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको लाइन दी हुई है दैट इज passes to origin and 211. So obtain the direction ratio. Obtain the direction ratio of line passing through first one origin O000 and the point A 211. तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? दैट इज वेक्टर OA that will be a x2 minus x1, 2 minus 0, y2 minus y1, z2 minus z1. So इसका डायरेक्शन रेशियो 211 which will be your A1 B1 and the which one C2. Clear? Same way we have to find out the direction ratio of line passing through point B. The coordinate are given 3 5 minus 1, and the second one that is the C. The coordinate are given as the 4 3 minus 1. So that direction ratio would be 4 minus 3, comma 3 minus 5, comma minus 1 minus minus plus 1 will be equal to minus 1 minus 2 0. Now use the condition. Now what's the condition? A1 into A2 plus B1 into B2 plus C1 into C2 we have to find out. A1 2, A2 minus 1. So 2 into minus 1. B1 1, B2 minus 2. So plus B1 that has been given as the, just 1 second. Oh, 4 minus 3 plus 1 also. Yeah, it will be a plus 1. Now which one? 1 into minus 2 and the last one C1 into C2. C1 1, C2 will be 0. So it will be 2 minus 2 0. If this condition satisfied, we can say that line OA is perpendicular to line BC. कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर होने की कंडीशन. सिमिलरली ऐसा ही एक और क्वेश्चन थर्ड वन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द थर्ड क्वेश्चन. क्या दिया है? फाइंड द एंगल बिटवीन अ लाइंस whose direction ratios are. So direction ratio of line L1 capital L लिखते. So it will be direction ratio will be
denoted as the L1, M1, N1. That value you have been given as the A, comma B, comma C, L1, M1, N1. Right? या तो A1, B1, C1. Right? Even we can say the direction ratio, that will be a what you can say A1, B1 and a C1. Similarly, the direction ratio of second line. So the direction ratio of line M. So that direction ratio we can say as the A2, B2 and a C2. That has been given as the B minus C, C minus A and the A minus B. Clear? So again condition check करो perpendicular होने के लिए, that is A1 into A2 plus B1 into B2 plus C1 into C2 we have to find out, right? So that will be equals to A into B minus C plus B into C minus A plus C into A minus B will be equal to AB minus AC plus BC minus AB plus CA minus BC equals to 0. Therefore, we can say that line L is perpendicular to line M. यहाँ पे एंगल बिटवीन देम फाइंड आउट करना था, तो डॉट प्रोडक्ट 0, so angle between them alpha will be equals to pi by 2. Clear? Just write down this one. यहाँ पे cos alpha part से भी करते तब भी उसमें पहले तो ऊपर तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 ही आता, और यू कैन से b1 बार डॉट b2 बार. वेक्टर या कार्टेशियन कोई भी फॉर्मेट यूज कर सकते हो फॉर द फॉर्मूला. Okay, now the next one that we have to talk about, that is the fourth question. We will see it. Simplest question दिया हुआ है. Find the equation of a line passing through origin and parallel to x-axis. So here you have been given that line passing through. Line have been passing through origin, यानी कि x1, y1, z1 will be 0, 0, 0. Here you have been given that line is parallel to x-axis. If the line is parallel to x-axis, that means direction of line. Direction of line. Line की direction क्या होगी? So it will be equals to just the I cap. जो x axis की डायरेक्शन वही लाइन की डायरेक्शन. सपोज ये x axis है, right? This has been the line. तो x axis और लाइन की डायरेक्शन सेम होगी. x axis की डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर यानी कि क्या हुआ I cap, तो लाइन की डायरेक्शन क्या होगी I cap. तो अब इसके लिए यहाँ पे दो इक्वेशन लिख देते हैं. फर्स्ट we will write down the vector equation of line. What is the formula of a vector equation of a line? That is equals to r bar equals to what? A bar plus lambda into b bar. B bar will be the direction. So here your r bar is equal to a bar, that is the point coordinate, 0 I cap, 0 j cap, 0 k cap, plus lambda into direction I cap, lambda belongs to r. That will be the vector equation of the line. Now, if you have to find out the word Cartesian equation. Cartesian equation of a line, if you want to find out, its formula is x minus x1 upon a equal to y minus y1 upon b equal to z minus z1 upon c.
सो x माइनस x1 0 अपॉन a यानी कि i कैप का कोफिशिएंट, y माइनस y1 यानी कि पॉइंट का y कोऑर्डिनेट अपॉन j कोफिशिएंट 0, z माइनस z1 upon k coefficient. So ultimate answer will be x by 1 equal to y by 0 is equal to z by 0. That will be the equation of a line. यहाँ पे डायरेक्ट इसके साथ कंपेयर करें तो ये 0 हो गया, तो r bar is equal to lambda I cap. r bar equal to lambda I cap या सिर्फ I cap के मल्टीपल हो, that means it will be a equation of x axis itself. But obvious है ना, x axis से पैरेलल लाइन जो ओरिजिन में से पास आउट हो तो वो खुद x axis ही हुई और उसका ही ये इक्वेशन है x by 1 equal to y by 0 equal to z by 0, या तो r bar is equal to lambda I cap, that will be called as the equation of x axis. क्योंकि x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होंगे उसमें x कोऑर्डिनेट चेंज होगा, y और z जीरो होंगे, लैम्डा 1 डालो 1 0 0, लैम्डा 2 डालो 2 0 0, लैम्डा माइनस 1 डालो माइनस 1 0 0, वो सारे पॉइंट कवर करेगा इफ r bar is equal to lambda I cap. Clear? Now the further part, इसके बाद next question, fifth one that we have to see. That is 4 points are given. We have to find out the angle between line AB and line CD. वापस angle between the two lines के लिए cos alpha की फॉर्मूला में A और you have been given, that is 1 2 3, and the B that has been given, that is equals to 4 5 7. अब इस लाइन AB की डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन लिखो तो IJK में लिखो, डायरेक्शन रेशियो लिखो तो कॉमा करके कार्टेशियन फॉर्मेट में लिख दो. क्लियर? तो वहां पे वेक्टर नहीं आएगा, रेशियो लिख रहे हो तो. अगर आप डायरेक्टली सिर्फ डायरेक्शन लिख रहे हो तो व्हाट यू कैन से, डायरेक्शन ऑफ लाइन AB, कोई भी दो पॉइंट में से पास आउट होती हुई लाइन की डायरेक्शन, that will be a which one, a vector joining those two points will be called its direction. Vector AB x2 minus x1 3 I cap, y2 minus y1 3 j cap, z2 minus z1 4 k cap. That will be a direction of line AB. Similarly, C और D दिया हुआ है. What has been the point C you have been given? The point C you have been given, that is minus 4 3 minus 6, and the point D you have been given, that has been equals to 292 292. What would be the direction of line CD? So the direction of line CD, suppose we will write down as the B2 bar. So the vector joining C to D will be the direction of line CD. So vector CD यानी कि 2 minus minus plus 4 6 I cap, 9 minus 3 that will be a 6 j cap, 2 plus 6 8 k cap. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है B1 और B2 are in a proportion, or you can say B2 bar has been equals to twice of the B1 bar. अगर इस तरह से डायरेक्शन के रेशियोस प्रोपोर्शन में हो, या तो कोई एक वेक्टर इक्वल टू ट्वाइस इनटू द सेकंड, यहाँ तो लैम्डा इनटू सेकंड वेक्टर, that means B1 and B2 will be the collinear. So therefore we can say that line AB will be parallel to line CD. So angle between them will be equals to 0. Clear about it? फिर से बोल रहा हूं, कोई भी दो लाइंस की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, यानी कि एक
b bar is equal to lambda into which one? b1 bar. That means that two lines have those directions same or opposite. That means both the lines will be parallel. cos अल्फा करके करते तब भी जाता, तो cos अल्फा आपका 1 आ जाता। अगर cos अल्फा से जाते ना आगे सिंप्लीफाइड हो जाता। व्हाट इज द फॉर्मूला? cos अल्फा इज इक्वल टू b1 बार डॉट b2 बार अपॉन व्हाट यू गॉट इट मोड b1 बार इनटू मोड b2 बार मिलता। वैल्यू रिप्लेस करो b1 डॉट b2 6 3s are 18 6 3s are 18 8 4s are 32 upon under 9 plus 9 plus 36 into under root 36 plus 36 plus 64. So it will be equals to 50 plus 80 68 you will get. This will be 18 plus 36. It will be equals to 54. This will be under 4 common 9 plus 9 plus this will be a which one not 16 आएगा ना, so it will be a which one 834 and this will be 4 common 16, so it will be 68 upon root 34 4 square root 2 root 34 ये 2 से कट होगा 34 ये कट cos alpha 1 cos will be 1 at 0 so alpha will be 0। इस तरह से सॉल्व कर सकते हो बट डायरेक्टली यहां से भी लिख सकते हो दैट इज which one 8 vector one vector have the which one lambda into second vector any vector having the what relation like x bar equal to lambda y bar or b1 bar b2 bar is equal to lambda b1 bar both vector parallel so the angle between both the lines will be 0। clear? okay इसके बाद 6 क्वेश्चन सिंपल है। दोनों लाइंस क्या दी हुए परपेंडिकुलर तो उनकी डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट 0 दिया हुआ है उस पर से आपको k फाइंड आउट करना है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ व्हिच वन k फ्रॉम दैट। क्लियर अबाउट इट? सो दैट यू हैव टू डू इन द होमवर्क। लास्ट टाइम अराउंड ये इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने करवाए थे। So the question number 6 will be in the homework. Just write down this one. Okay. Now we will talk about the 9th question of the exercise. Find the shortest distance between the two lines. Shortest distance, that means it must be a skew lines and the shortest distance between a skew lines की formula आपके पास available है वो use करनी है। तो उसके लिए लाइन पर कितनी चीजें चाहिए? 1 that is a point on the line, second you require the direction of the line। दोनों लाइन के इक्वेशन पर से पॉइंट और डायरेक्शन निकाल दो। सो हियर द फर्स्ट लाइन यू हैव बीन गिवन दैट इज लाइन L1 वी विल कंसीडर द इक्वेशन ऑफ लाइन L1 इज r bar equals to लाइन L1 का इक्वेशन है r bar is equal to 6 I cap plus 2 j cap plus 2k cap plus lambda into second what direction that is I cap minus 2j cap minus plus 2k cap. That's the what you have been given equation. So for this line the point A having a position vector a bar or a1 bar will be equal to 6 I cap plus 2j cap plus 2k cap
ये आपका क्या हुआ पॉइंट, लैम्बडा के साथ जो मल्टीप्लिकेशन है इट विल बी कॉल्ड एज अ डायरेक्शन ऑफ लाइन, that will be b1 bar will be equals to I cap minus 2j cap plus what you will get 2k cap. Similarly, second line also you have been given. What's the line? L2 इक्वेशन दिया हुआ है, L2 का इक्वेशन आपको दिया है r bar is equals to minus 4I cap माइनस के कैप, ये आपका क्या हुआ पॉइंट, म्यू के साथ इनटू में जो है दैट विल बी अ व्हिच वन डायरेक्शन, दैट हैज बीन 3i minus 2j, 3i cap minus 2j cap minus 2k cap, guide mu belongs to r, that will be the one. Clear? तो अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल what would be the point, the second point B, its position vector we can write down as the A2 bar will be equal to minus 4I cap, J नहीं है तो plus 0k cap minus k cap, and the direction we will denote it as the B2 bar will be equal to 3I cap minus 2j cap minus 2k cap. अब सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, तो इन फॉर्मूला वी रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b1 बार क्रॉस b2 बार. क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट होता है, डिटरमिनेंट में i j k b1 के कोफिशिएंट 1 minus 2 b2 के कोफिशिएंट 3 minus 2 minus 2. Expand this determinant, तो I cap minus 2 into minus 2 4 minus minus plus 4 minus j cap into row gone column gone minus 2 minus 6 plus k cap into row and column gone minus 2 minus minus plus 6. So b1 bar cross b2 bar will be equal to 8I cap minus 8j cap plus 4k cap. Clear? Now what you have to find out? We have to find out A2 bar minus A1 bar, यानी कि b minus a minus 4I minus 6I which will be equal to minus 10I cap. Then a 0j cap minus 2j cap will be minus 2j cap minus k cap minus 2k cap will be minus 3k cap. Now what's the formula for shortest distance? The formula of the shortest distance between two lines, shortest distance between the two lines will be equals to modulus of b1 bar cross b2 bar dot a2 minus a1, ये जो डॉट प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड होल डिवाइडेड बाय modulus of b1 bar cross b2 bar. तो यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करो, so it will be modulus of b1 cross b2 की वैल्यू आई 8I cap minus 8j cap plus 4k cap that have the dot product with a2 minus a1 minus 10I cap minus 2j cap minus 3k cap upon modulus of b1 bar cross b2 bar, तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट x स्क्वायर 64 प्लस x स्क्वायर 64 प्लस 16, so it will be equal to minus 80 minus minus what plus 16 minus 12 upon
64 plus 16, 80. 80 plus 64, 144. So now this will be equals to minus 76 divided by 12. So it will be a 76 by 12, which will be equal to 38 divided by 6 या 4 से कट करो, it will be 19 by 3 will be the shortest distance. Clear? Just write down this one. Just 1 second, एक कैलकुलेटिव एरर है, -2 -6 -8 वो माइनस से मल्टीप्लाइड होगा, +8 आएगा, so here it will be a +8, so this will be a -16, so it will be -108, so this will be equal to 108 divided by 12, which will be equals to what you will get 9. So answer will be +9. Now the 20th question of the miscellaneous exercise. In the 20th question, we have to find a vector equation of a line passing through the point and which will be perpendicular to given two lines. दो lines दी हुई है. Line L1. Cartesian equation of line L1 is given as the x minus 8 divided by 3 equals to y plus 19 divided by minus 16 equal to z minus 10 divided by 7. Clear? So for this equation, what we have to write down? We require the direction. इसकी direction क्या होगी? So the direction we can say as a b1 bar will be equal to 3i cap minus 16j cap plus 7k cap. That will be the direction of this line. Similarly, the second line we have been given, that's the line L2 we can consider. So line L2 जो दी हुई है, equation दिया हुआ है x minus 15 divided by 3 equals to y minus 29 divided by 8 is equal to z minus 5 divided by minus 5. So for this line, it's the direction of this line we will denote as the B2 bar, which will be equals to 3i cap plus 8j cap minus 5k cap. Suppose required line L है, तो required line L is perpendicular to L1 and required line L is perpendicular to L2. अब required line passing through the one point दिया हुआ है required line के लिए, लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना हो तो यू रिक्वायर टू थिंग्स. एक पॉइंट जिसमें से लाइन पास हो रहा है, दूसरा पॉइंट लेके आओ तो दो पॉइंट में से लाइन का इक्वेशन मिल सकता है, या तो पॉइंट एंड अ डायरेक्शन. फिक्स रूल है, इफ यू वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, कोई भी सम में लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना हो तो you require exactly two things. One, that is you require a one point. Second, either you require another point, यानी कि दो पॉइंट चाहिए, या तो एक पॉइंट और डायरेक्शन चाहिए. यहाँ एक पॉइंट पता है, दूसरा पॉइंट we doesn't know it, क्योंकि इस तरह से हो सकता है. सपोज ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है. रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी? रिक्वायर्ड लाइन L इस तरह से होगी, ये जो है ना, ये लाइन L होगी. क्यों?
क्योंकि लाइन एल इससे भी परपेंडिकुलर है, इस लाइन को भी परपेंडिकुलर, बट ऐसा नहीं बोला है कि वो ये पॉइंट में से पास आउट होगी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास आउट हो रही है, ऐसा नहीं है, वो कहीं से भी पास आउट हो सकती है। इट विल बी लाइक दिस आल्सो, इट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस टू लाइंस। तो अगर वो ये दोनों लाइन से परपेंडिकुलर है तो इस लाइन की डायरेक्शन b1 बार, इस लाइन की डायरेक्शन b2 बार, तो रिक्वायर्ड लाइन की डायरेक्शन b बार, वो b1 बार और b2 बार दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर होगा। दैट मींस व्हाट वी कैन से, द डायरेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन L B bar will be perpendicular to B1 bar and B bar would be perpendicular to B2 bar। अब कोई भी दो वेक्टर उन दोनों को परपेंडिकुलर वेक्टर विल बी व्हाट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर में ये लॉजिक मिनिमम 10 सम में यूज करेंगे। प्लेन देखेंगे ना, प्लेन में ऑलमोस्ट 50% सम्स में ये लॉजिक यूज करना है। कोई भी दो वेक्टर दिए गए हो, उन दोनों को परपेंडिकुलर वेक्टर इस तरीके से अगर फाइंड करना हो तो वेक्टर परपेंडिकुलर टू x बार एंड y बार बोथ विल बी इट्स क्रॉस प्रोडक्ट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको कोई ऐसा वेक्टर चाहिए जो गिवन टू वेक्टर्स को परपेंडिकुलर हो, यानी कि यू रिक्वायर्ड अ b bar which is perpendicular to b1 and b2 both, therefore your b bar must be a which one, b1 bar cross b2 bar, क्योंकि वो भी एक परपेंडिकुलर वेक्टर यही होता है। What I said, if you have been given a two vectors, उन दोनों को परपेंडिकुलर वेक्टर यानी कि उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, so b bar will be this one, b1 bar cross b2 bar। तो पहले हम b1 bar cross b2 bar फाइंड आउट करेंगे, और you can say that vector b bar will be parallel to b1 bar cross b2 bar, या तो b1 bar cross b2 bar डायरेक्ट लिख दो चलेगा। So therefore आपकी लाइन की जो डायरेक्शन होगी, that direction will be what we can say, it will be b1 bar cross b2 bar। Again and again repeat कर रहा हूं, if you have been given this kind of a thing, क्या दिया हो, कोई दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर्स को परपेंडिकुलर, राइट, दिस तरीके से लाइन हो, line L perpendicular to this one and perpendicular to this one, यानी कि इन दोनों को perpendicular हो, so its direction will be a which one, that cross product। So b1 bar cross b2 bar find out करो, कैसे फाइंड आउट करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, I J K, b1 bar के कोफिशिएंट 3 minus 16 7, b2 bar के कोफिशिएंट 3 8 minus 5। क्लियर? अब इसको सिंप्लीफाइड करो, I रो वन कॉलम वन, माइनस माइनस प्लस, 16 5 80 minus 56 minus j cap रो वन कॉलम वन माइनस 15 माइनस 21 प्लस के कैप रो एंड कॉलम वन 8 3 24 प्लस 48, so it will be equals to 24 I cap minus 30 minus minus plus 36 j cap plus 68 72 k cap। Clear? So it can be also written down as a 24, अरे 24 नहीं 12 कॉमन ले लो, 12 कॉमन आएगा इन सब में से,
12 common 2I cap plus 3j cap plus what you can say 6k cap. ये डायरेक्शन हुई, so that will be a which one your required direction b bar and line passing through. You have been given a point passing through. Which point you have been given? It has been passing through the point that you have been given, that is 1 2 minus 4. 1 2 minus 4. So here we have to find a vector equation of line. Line का कौन सा equation चाहिए? We require the which one? Vector equation of a line, that is r bar is equal to a bar plus lambda b bar. Lambda will be any real number. तो a bar पता है, b. So what would be your a bar? So r bar will be equals to a bar, that is a point which will be equal to I cap plus 2j cap minus 4k cap plus lambda, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 12 इंटू लैम्बडा बन जाएगा 2I cap plus 3j cap plus what you will get 6k cap. अब ये 12 लैम्बडा को नया कांस्टेंट भी लिख दो, फर्क नहीं पड़ता, लैम्बडा तो कोई भी रियल नंबर है, तो 12 लैम्बडा भी कोई भी रियल नंबर होगा. So the equation that you will get, that is r bar is equals to what you can say, ये लैम्बडा इनके साथ जो भी कांस्टेंट है ना, उस कांस्टेंट को नए कांस्टेंट के फॉर्मेट में लिख सकते हो. गाइड, लैम्बडा कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, लैम्बडा सारे रियल नंबर्स होता है, सो इट विल डजंट मेक एनी प्रॉब्लम. सो इट विल बी प्लस what you will get mu into this, that is 2I cap plus 3j cap plus what you will get 6k cap, which will be the equation of line. मेन लॉजिक यही याद रखना है, अगर लाइन कोई भी दो लाइन को परपेंडिकुलर तो उसकी डायरेक्शन भी दोनों लाइन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, और कोई भी दो वेक्टर को परपेंडिकुलर वेक्टर यानी कि उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, सो b bar would be that one. Clear about it? Just write down this one. Now the next question, second previous question जैसा ही, LMN and L1 M1 M1 and L2 M2 M2 are the direction cosine of two perpendicular lines. So first of all, here you have been given that direction cosine of line L1 is equals to L1 M1 N1. Therefore its a direction अगर लिखनी हो तो B1 bar is equals to L1 I cap. ये B1 cap है क्योंकि ये डायरेक्शन cosine है, so that means it will be a unit vector. It will be a which one? Unit vector. That means mod B1 bar will be equals to under root L square L1 square plus M1 square plus N1 square will be 1. डायरेक्शन cosine यानी कि यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1. L square plus M square plus N square क्या होगा 1. सिमिलरली दूसरी लाइन दी हुई है, that is डायरेक्शन cosine of second line L2 will be equals to L2 M2 N2. Clear about it? So that means the B2 bar will be equals to L2I cap plus M2J cap plus N2K cap
and the modulus of B2 will be a which one magnitude of direction cosine. कोई भी टर्म के डायरेक्शन कोसाइन यानी कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इट विल बी इक्वल्स टू 1. Now what you have done? These two lines are perpendicular. दिया हुआ है ना? Now line L1 is perpendicular to L2. Therefore, angle between them will be pi by 2. Angle between them will be equals to pi by 2. अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है पढ़ो लो. The question has been asked like this one. Find the direction cosine of a line perpendicular to both. तो आपकी रिक्वायर्ड लाइन L1 और L2 दोनों को परपेंडिकुलर है. So what here you have been given? The required line L perpendicular to L1 and L perpendicular to L2. Therefore, the direction of required line L, that is B bar if you consider. So B bar will be perpendicular to B1 bar and B bar is perpendicular to B2 bar. Therefore, what you can say? B bar will be collinear with, B bar is collinear or equal to भी लिख सकते हो, collinear with B1 bar cross B2 bar. जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में जो लॉजिक था वही कि कोई भी दो लाइन हो, उन दोनों लाइन को परपेंडिकुलर लाइन, इफ यू हैव बीन गिवन एनी टू लाइंस, उन दोनों को परपेंडिकुलर लाइन द डायरेक्शन, उन दोनों डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट. फिक्स रूल अभी भी बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है. कोई भी दो वेक्टर दिए गए हैं, कोई भी फॉर्मेट में हो, उन दोनों को परपेंडिकुलर वेक्टर राइट हैंड थंब रूल यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट याद रखो. वेक्टर x बार y बार, तो दैट परपेंडिकुलर वेक्टर विल बी x बार क्रॉस y बार. b bar perpendicular to b1 and b2, so b bar will be equal to b1 bar cross b2 bar. So obtain the value of your b1 bar cross b2 bar. So b1 bar cross b2 bar will be equal to I j k, then L1 m1 n1, L2 m2 n2. Expand this determinant, so it will be m1 n2 minus m2 n1 into I cap minus j cap के साथ आएगा L1 n2 minus L2 n1 plus k cap के साथ आएगा L1 m2 minus L2 m1 minus L2 m1. तो इसको थोड़ा सिंपलीफाइड कर देते हैं, ये माइनस अंदर चला जाएगा. सो इट विल बी इक्वल टू m1 n2 माइनस m2 n1 into I cap plus L2 n1 minus L1 n2 into what? J cap plus L1 m2 minus L2 m1 into k cap. क्लियर? बट आपको पूछा हुआ है डायरेक्शन कोसाइन. डायरेक्शन कोसाइन का मतलब ये जो आपकी डायरेक्शन हुई मस्ट बी डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. सो वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ b1 बार क्रॉस b2 बार. उसका मैग्नीट्यूड चाहिए. तो यहां पे इसका मैग्नीट्यूड निकालने नहीं बैठेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला कोई भी दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड यानी कि मोड x बार मोड y बार साइन अल्फा. अल्फा दैट इज द एंगल बिटवीन b1 एंड b2. b1 b2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन, तो उन दोनों के बीच का एंगल 90 होगा. सो इट विल बी sin 90. मोड b1 बार 1 मोड b2 बार 1 sin pi by 2 1.
सो यानी कि b1 बार प्लस b2 बार खुद ही यूनिट वेक्टर है। Therefore, the direction cosine of the required line की direction cosine it will be equals to m1 n2 minus m2 n1 comma second one that is L2 n1 minus n2 L1 comma third one that is L1 m2 minus L2 m1 clear। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी 1 है तो देयरफॉर इट विल बी अ डायरेक्शन कोसाइन। लास्ट के दो क्वेश्चंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर। जस्ट राइट डाउन दिस वन। दिस कंक्लूड्स द लाइन पार्ट। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में मेनली दो पार्ट है। फर्स्ट दैट इज द लाइन इन अ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, सेकंड दैट इज अ प्लेन। सो नाउ वी विल स्टार्ट द प्लेन। Okay, now for the plane. First of all, when we are talking about the plane, any surface will be called as a plane. ये plane हो गया। Any surface that will be called as the plane. कोई भी surface ले लो, that will be a plane. Plane just like a line, it will have to contains the infinite numbers of plane. Even it will contains the infinite numbers of vector in it. अगर 3 या 3 से ज्यादा वेक्टर एक प्लेन में है then they will be called as the coplanar vectors. अब प्लेन समझने के लिए क्योंकि प्लेन भी क्या हुआ इनफाइनाइट वेक्टर या इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन करता है तो उसके इक्वेशन और उन सबके लिए बात करनी हो तो सबसे पहले we have to talk about the normal of a plane. सबसे पहले we have to talk about the normal of a plane. Normally plane का normal denoted as the n bar. अब plane का normal समझ लो। सपोज ये सरफेस मेरी प्लेन है, दिस हैज बीन द व्हिच वन प्लेन। अब इस प्लेन के अंदर जितने भी वेक्टर्स हैं उन सभी वेक्टर्स को परपेंडिकुलर हो ऐसा कोई एक वेक्टर अवेलेबल हो, दैट वेक्टर विल बी कॉल्ड एज द नॉर्मल डिनोटेड बाय n बार। समझना है? ये प्लेन है, ये सरफेस हुई, इस प्लेन में कितने वेक्टर्स होंगे 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस है। कितने भी इनफाइनाइट वेक्टर्स होंगे, वेक्टर्स नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉइंट। प्लेन के अंदर जितने भी वेक्टर है उन सबको परपेंडिकुलर वेक्टर ये रहा, ये वेक्टर इसको भी परपेंडिकुलर, इसको भी परपेंडिकुलर। ये जो डायरेक्शन आ रही है ना बाहर की डायरेक्शन या तो अंदर की ओर जाए इस साइड, दैट विल बी दिस द वेक्टर और दिस वेक्टर, दैट विल बी कॉल्ड द नॉर्मल ऑफ अ प्लेन। डेफिनेशन समझ में आई? नॉर्मल का मतलब क्या हुआ? अ वेक्टर नॉर्मल दैट इज अ व्हिच वन? अ वेक्टर ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल यानी कि परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर ऑफ अ प्लेन that will be called as a normal. Clear? अब n cap लिखे so that means the normal divide by its magnitude. Suppose इसके एलिमेंट हम लिख रहे हैं l I cap plus m j cap
प्लस एन के कैप, तो एलएमएन क्या हो गई, तो एलएमएन is direction cosine. Element is a direction cosine of normal. Element normal की direction cosine है, so therefore we will get L square plus M square plus n square will be equals to 1, यानी कि नॉर्मल की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर that will be called as a direction cosine. डायरेक्शन cosine कहीं पे भी वर्ड आए यानी कि जिसकी भी डायरेक्शन cosine उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर यानी कि वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड will be called as the direction cosine. Clear? So L square plus M square plus n square is equal to क्या होगा 1. अब ये डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर पर से प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट इक्वेशन दैट इज फर्स्ट थियरी दैट वी विल टॉक अबाउट, दैट इज इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passing through, equation of a plane passing through point A bar. Point A bar में से पास आउट होता हुआ प्लेन and having normal n बार, प्लेन का नॉर्मल n बार है. तो ये इक्वेशन डिराइव करके दिखा रहा हूं किस तरह से ये इक्वेशन फॉर्म हो रहा है. ये देखो प्लेन पाई, सपोज यहां पे कोई पॉइंट ए बार दिया हुआ है. अब इस प्लेन में मैं कोई एक वेक्टर फॉर्म कर रहा हूं, तो प्लेन पर के कोई भी और दूसरा पॉइंट कंसीडर कर लूं, एनी वेरिएबल पॉइंट पी आर बार. तो वेक्टर एपी इज एनी वेक्टर इन अ प्लेन, प्लेन के अंदर का कोई भी वेक्टर है. अब नॉर्मल क्या होगा, तो नॉर्मल इस तरीके से आएगा, दैट नॉर्मल एन बार वुड बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर एपी. अगर कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, that means that dot product will be 0. So dot product will be 0. That will give you the equation of the plane. ये इसका वेक्टर फॉर्म होगा, वेक्टर एपी. वेक्टर एपी यानी कि टर्मिनल माइनस इनिशियल. So it should be a variable point r bar variable है, minus a bar dot n bar is equals to 0. This will be the equation of a plane. ये आपके प्लेन का इक्वेशन हुआ. r bar वेरिएबल पॉइंट, a bar that is a given point. इस पर से कार्टेशियन इक्वेशन लाने के लिए पॉइंट ए बार के का कोऑर्डिनेट मैं ले रहा हूं x1 y1 z1. गॉट वेरिएबल पॉइंट p के कोऑर्डिनेट मैं ले रहा हूं x y एंड z. और जो नॉर्मल n बार है दैट आई एम कंसीडरिंग एज द a I कैप कैपिटल में ले रहा हूं प्लस b j कैप प्लस c k कैप. तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कार्बन माइनस ए बार x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, उसका इसके साथ x माइनस x1 इंटू i कैप प्लस y माइनस y1 इंटू j कैप प्लस z माइनस z1 इंटू k कैप, उसका डॉट प्रोडक्ट नॉर्मल के टर्म्स ai कैप प्लस bj कैप प्लस सी के कैप के साथ क्या होगा 0. क्यों? परपेंडिकुलर, सो डॉट प्रोडक्ट 0. तो डॉट प्रोडक्ट फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सो दिस विल गिव यू द कार्टेशियन इक्वेशन. सो द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट इज ए बी सी नॉर्मल के टर्म्स. फिर उसके साथ x वेरिएबल माइनस जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट प्लस
b के साथ y वेरिएबल फिर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट प्लस c के साथ z माइनस z1 is equal to 0 is called the Cartesian equation of a plane. So what's the formula of A B C? क्या हुआ? नॉर्मल के x y z कोऑर्डिनेट उसके साथ x माइनस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट y वेरिएबल माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट z वेरिएबल माइनस z कोऑर्डिनेट ऑफ अ प्लेन. This will be a equation of a plane. Clear about this one? Second theory that we have to talk about, that is equation of a plane in normal form. अब आपको ये होगा ये भी नॉर्मल से ही आया हुआ है ना, हाँ ये भी नॉर्मल से आया हुआ है, बट नॉर्मल फॉर्म का मतलब आप नॉर्मल की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ले रहे हो. तो यहाँ पे क्या दिया होगा? तो हियर यू हैव बीन गिवन दैट एन कैप दैट इज इक्वल्स टू एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप is unit normal. Is a which one? Unit normal. या तो नॉर्मल की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर and a d. It will be a which one? Perpendicular distance. Perpendicular distance of plane. Of plane from origin. ओरिजिन से प्लेन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को d बोलेंगे. Then from this the equation of plane पहले वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, right? It will be in a vector form. तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ अ प्लेन will be r bar dot n cap is equals to d. क्या होगा? r bar dot n cap equals to d. बट इसका कार्टेशियन फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वी विल टॉक अबाउट द व्हिच वन? कार्टेशियन फॉर्म. r bar यानी कि x y z, n cap element, तो डॉट प्रोडक्ट करो तो lx प्लस my प्लस nz is equals to d. That will be called as the Cartesian form, जहां पे d will be the perpendicular distance from origin. उसके लिए एक ही याद रखना है कि ये एलिमेंट जो भी नॉर्मल हो उसको उसकी डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट करो, यानी कि उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके लेफ्ट हैंड साइड पे यूनिट नॉर्मल लाओ, तो राइट हैंड साइड पे ऑटोमेटिकली जो कांस्टेंट पॉजिटिव कांस्टेंट और नॉट नेगेटिव, जो पॉजिटिव कांस्टेंट बचेगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होगा. And the second one, that is foot of perpendicular. Foot of perpendicular from origin to plane. प्लेन से कहां पे? ओरिजिन से प्लेन पर का फुट ऑफ परपेंडिकुलर. ये समझ लो क्या है. ये ओरिजिन हुआ, ओरिजिन से यहाँ पे प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो वो परपेंडिकुलर प्लेन को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे that will be called as a foot of perpendicular. और foot of perpendicular की कोऑर्डिनेट होंगे LD, then m into d, then n into d. What it will be? It will be LD, MD and d. Element डायरेक्शन कोसाइन d यानी कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर, अरे सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, उन दोनों के प्रोडक्ट से जो टर्म्स आए that will be called as a foot of perpendicular. Clear about it? So just write down this theory.
Okay, now we will see exercise 11.3. उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो ये सेकंड थियरी बेस है वो आज कंप्लीट कर लेते हैं. So in the question number 1, first one that you have been given equation of plane. प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है z इज इक्वल्स टू 2. क्लियर. तो इसका नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल का मतलब x y z के जो कोफिशिएंट होंगे, यही है ना कार्टेशियन इक्वेशन. इसके साथ कंपेयर करो तो l m n मिल जाएगा. l 0 m will be 0 and 1. तो वो जो होगा वो नॉर्मल के कोऑर्डिनेट होंगे. उस पर से उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करना होगा. So here your n bar will be equal to 0 I cap plus 0 j cap, क्योंकि x और y है ही नहीं, plus 1 k cap itself is a which one unit vector. Therefore यही आपकी क्या होगी? डायरेक्शन कोसाइन. This also will become the डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर ही है. k कैप अकेला है ना तो यूनिट वेक्टर ही हुआ ना. I और j के कोएफिशिएंट 0 है. So that means डायरेक्शन कोसाइन will be 0 0 1. ये आपका L M N हो गया. क्लियर. L0 M0 N1 एंड तो ये डायरेक्टली नॉर्मल फॉर्म ही है. तो नॉर्मल फॉर्म के साथ कंपेयर करो तो d equals to 2 will be perpendicular distance from origin. Will be perpendicular distance from what you can say origin. Clear about it? d equals to 2, ये origin से perpendicular distance है. Now the second one that we have to talk about in this one, equation of plane. तो प्लेन का इक्वेशन है x plus y plus z that has been equals to 1. तो यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा? फिर से बोल रहा हूं, x y z के कोएफिशिएंट is called the normal of a plane. x का कोएफिशिएंट 1 तो I cap, y कोएफिशिएंट 1, z कोएफिशिएंट 1. So n bar will be equal to I plus j plus k. ये नॉर्मल हुआ. Obtain the mode n bar will be equals to under root 1 plus 1 plus 1 root 3. ये आपका क्या हो गया? This will be the its magnitude of n bar. तो obtain the n cap unit normal, that is n bar, divided by its magnitude, that will be a n cap. Again repeat कर रहा हूं, n cap डायरेक्शन कोसाइन यानी कि यूनिट नॉर्मल. सो इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट? I by root 3 यानी कि 1 by root 3 I cap plus 1 by root 3 j cap plus 1 by root 3 k cap. अब जो प्लेन के इक्वेशन है ना, उस प्लेन के इक्वेशन को ये फॉर्मेट में कन्वर्ट करो. यानी कि x y z के कोएफिशिएंट 1 by root 3 लाने हैं तो डिवाइड होल इक्वेशन बाय 1 by root 3. तो lx plus my plus nz इज इक्वल टू, सामने भी रूट 3 से डिवाइड होगा, दोनों साइड डिवाइड करो. जस्ट डिवाइडिंग बाय रूट 3. What we are doing? Dividing by what? root 3 on both the sides, ताकि Lx plus My plus Nz फॉर्मेट आ जाए. तो इक्वल्स टू सामने जो आया d इक्वल्स टू 1 by root 3 will be the perpendicular distance from origin. That will be a perpendicular distance from origin. Clear about this one? Okay, चलो
नाउ द थर्ड क्वेश्चन इसी फोर्थ वन करवा देता हूं थर्ड होमवर्क में। तो फोर्थ में क्या दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन 5y plus 8 equal to 0. So it's a normal n bar. X coefficient 0, y coefficient 5, z coefficient 0. तो ये आपका n बार हुआ, प्लस 8 नहीं आएगा, वो तो कांस्टेंट है, 0 i कैप 5 j कैप दिस वन। तो n कैप फाइंड करो, n cap will be equal to under root 0 plus 25 plus 0 will be 5। अब एक इंपॉर्टेंट रूल, जब भी आप नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो उस टाइम पे d कंपल्सरी पॉजिटिव होना चाहिए, as d is the perpendicular distance from origin। इसलिए यहां पे 8 ऑपोजिट साइड नहीं जाएगा, 8 तो पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस 5y सामने जाएगा। सो द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विल बिकम माइनस 5y इज इक्वल्स टू 8। क्यों? क्योंकि ये जो कांस्टेंट है वो कंपल्सरी पॉजिटिव होना चाहिए, और फिर जो आपका सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ n बार आया ना, उस मैग्नीट्यूड ऑफ n बार से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करोगे माइनस y इज इक्वल टू 8 बाय 5। दिस विल बी द योर फॉर्म। फिर से बोल रहा हूं कि यहाँ पे जो इक्वेशन था उसमें हमें d पॉजिटिव रखना होता है। सपोज यहाँ पे मुझे +1 इक्वल टू 0 दिया होगा ना, तो मैं +1 यहां रखता, एक्स वाई जेड तीनों को राइट हैंड साइड ले जाता। कांस्टेंट हर बार जब भी ये नॉर्मल फॉर्म ला रहे हो ना, यूनिट नॉर्मल फॉर्म, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले फॉर्म में कांस्टेंट हर बार पॉजिटिव रखो। एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट नेगेटिव में होंगे तो चलेगा, इसलिए मैंने 5y सामने ले गया, 8 इज इक्वल टू माइनस 5y किया। फिर यूनिट नॉर्मल लाने के लिए पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड करो, तो ये यूनिट नॉर्मल हो गया। सो नाउ यहां पे सामने जो d आया 8 by 5, that is the perpendicular distance from origin। एक ही रूल याद रखना है, you always have to divide by which one, mod n bar। यहां पे भी पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड किया, mod n bar से डिवाइड किया। यहां मोड n बार 1 था तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर अबाउट इट? सो जस्ट राइट डाउन दिस वन। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन 4, वो भी यही टाइप का है। Just look at that one. Question 4a, क्या दिया हुआ है, प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है। What's the equation of the plane is given, that is 2x plus 3y plus 4z minus 12 equal to 0। कांस्टेंट पॉजिटिव कर दो, तो कांस्टेंट और एक्स वाई जेड ऑपोजिट साइड पे होने चाहिए। तो यहाँ पे -12 सामने ले जाके +12 में कन्वर्ट कर दो, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया प्लेन का। उसमें जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होते हैं उसे बोलते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल ऑफ द प्लेन विल बी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये नॉर्मल हुआ। ऑब्टेन यूनिट नॉर्मल, पर उसके लिए मैग्नीट्यूड ऑफ n बार फाइंड करो। मैग्नीट्यूड ऑफ n बार विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 16 विल बी इक्वल टू रूट 25। तो पूरे इक्वेशन को उससे डिवाइड करो, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय जो भी मोड n बार आए उससे डिवाइड करो,
तो क्या मिलेगा प्लेन का इक्वेशन 2/√29 into x plus 3/√29 into y plus 4/√29 is equals to 12/√29। ये आपका नॉर्मल फॉर्म हो गया, यानी कि L 2/√29 and that will be 3/√29 and 4/√29. Perpendicular distance from origin D will be equal to 12/√29। ये आपका नॉर्मल फॉर्म Lx plus My plus Nz is equal to D फॉर्म हुआ। क्लियर? अब आपको यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? We have to find out the foot of perpendicular from origin, जिसकी डायरेक्ट फॉर्मूला है foot of perpendicular from origin। origin से foot of perpendicular की फॉर्मूला which is equal to L into D, N into D, N into D। तो L into D 2/√29, 12/√29, so 24/29, M into D 12 3s are 36/29, similarly 4 and 12 48/29। क्लियर? Got it? इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करवा देता हूं। इन दैट क्वेश्चन में बी वाला करवाता हूं, अगेन रिपीट कर रहा हूं। गाइड क्या दिया हुआ है? 3y plus 4z minus 6 equal to 0। सपोज मैं ये क्वेश्चन चेंज कर देता हूं, बी वाला अपने आप कर लेना, मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूं। -6 की जगह +6 दिया हुआ है, तो किससे ऑपोजिट साइड ले जाएंगे? नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए डी पॉजिटिव चाहिए, तो yz ऑपोजिट साइड होगा -3y -4z इक्वल टू 6। ये बी वाला क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। क्या याद रखना है? कांस्टेंट पॉजिटिव yz नेगेटिव हो चलेगा, तो अब इसका नॉर्मल क्या होगा? I x के साथ 0, y के साथ -3, so it will be -3j cap -4k cap। Obtain the magnitude mod n bar √0 plus 9 plus 16 25 square root 5। तो जो भी मोड n बार आए उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड करो, डिवाइडिंग बाय 5 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करोगे, -3/5 into y -4/5 into z will be equal to 6/5। now this will be a normal form, जिसको Lx से साथ कंपेयर करो तो L0, My के साथ कंपेयर करो M into y -3/5, and z के साथ कंपेयर करो तो n -4/5 और d 6/5। ये d क्या हुआ? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। एंड लास्ट वन दैट वी हैव टू फाइंड आउट, दैट इज द व्हिच वन? फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर की फॉर्मूला LD MD ND। L0 into D will be 0, M -3/5 into 6/5 -18/25, N into D -24/25। Clear? So in the homework, make sure that आपको आगे भी बोला था, एग्जांपल्स मैंने दिए थे। What you have said, एग्जांपल्स 1 to 12 आपको लास्ट लेक्चर में दिए थे, अगर बाकी हो तो वो कंप्लीट करो। एग्जांपल 1 to 12 करने हैं। एक्सरसाइज 11.3 में क्वेश्चन नंबर 1 and 4 यू हैव टू कंप्लीट, और
एक्सरसाइज 11 में यानी कि मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 to 7, 9 and 20 इतना पोर्शन कंप्लीट करना है। क्लियर?